ബീഹാറിലെ പട്നയിൽ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ വീട് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പട്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. പട്നയിലെ അംഗംകുവാൻ മേഖലയിൽ യാതൊരുവിധ മുൻകൂർ നോട്ടീസും നൽകാതെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ വീട് നിയമവിരുദ്ധമായി പൊളിച്ചു നീക്കിയ സംഭവത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് കുമാർ സർക്കാരിനും പോലീസിനുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട SP ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ജസ്റ്റിസ് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമാഫിയയുമായി ചേർന്ന് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത പോലീസുകാർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബീഹാറിലും ഇപ്പോൾ ബുൾഡോസർ രാജ് തുടങ്ങിയോ എന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സിവിൽ കോടതികളായി മാറിയോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. പരാതിക്കാരിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവിടുമെന്നും കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ജനവിധി തേടി NDA സർക്കാർ അധികാരമേറി മാസങ്ങൾ തികയും മുൻപേ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി ഭരണത്തിൽ കയറിയവർ അധികാരം കിട്ടിയ ആവേശത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ വഴിയാധാരമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പട്നയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പോലീസും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭൂമാഫിയയുടെ ഏജന്റുമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചകളെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല, വീട് പൊളിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരാതിക്കാരിയെയും കുടുംബത്തെയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ പോലീസ് കള്ളക്കേസ് എടുത്തതായും കോടതി കണ്ടെത്തി. ഈ കേസ് സ്റ്റേ ചെയ്ത കോടതി ഹർജിക്കാരിക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയിലെ രംഗങ്ങൾ കൂടി വാർത്തയോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से का जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, दिस हैज टू बी स्टॉप. जनता दरबार अब पुलिस और CO मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर. जो लगाया जा रहा है वैसा है नहीं. नहीं, आप तो बहुत दूध के धुले हुए हैं. पुलिस में आपसे ऐसा अवसर पैदा नहीं हुआ. आ गया SHO का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप. मैडम तैयार होके आइए. उस दिन 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको. इससे पहले वो अगमकुआं का ही ना प्रॉपर्टी था, वो डॉक्टर साहब का जो कब्जा हुआ था. सुनिए मिस्टर, वो जजमेंट पढ़ के आइएगा मेरा अगमकुआं वाला. एक अफसर इंचार्ज जेल जाएगा पटना टाउन का, आप लोग वो खत्म करेंगे. काउंटर एफिडेविट डायरेक्शन दिया गया था. काउंटर का कॉपी दीजिए मैडम. पहले तो कॉपी दिया जाता है, फिर कोर्ट में फाइल होता है. The Learned Council for the State है. 2 वीक दिया गया सर्किल ऑफिसर काउंटर फाइल करने के लिए. The Learned Council for the State has filed one counter affidavit on behalf of the SHO Agamkuan. But this counter affidavit of the state is not filed, and the Learned Council submits that she wants 2 weeks time to file counter affidavit of the state. This is a matter from कहाँ का है? अगमकुआं. क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? घर क्यों तोड़ दिया? विदाउट एनी नोटिस वर्शिप. पेज नंबर 17 से 21 पिक्चर लगा, फोटो लगा हुआ. इवन वर्शिप बुलडोजर लेकर आए गए. बुलडोजर पेज नंबर 21 पर वर्शिप फोटो है. क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे. कौन है ये संजय सिंह रेस्पोंडेंट जिसके कहने पर आपने किया है? हुई थी some land mafia or someone? The counter affidavit of the SHO says that the respondent number 11 Sanjay Kumar Singh appeared before the Janta Darbar convened on 15/1/2022, stating therein that as per the inquiry report of the Circle Officer Patna Sadar, Jamabandi has been created in his name against the land appertaining to the Thana number 12, Khata number 565 of 80/82, plot number 182, measuring 5 decimal. And notices were issued to the petitioner and her sons, but none of them appeared before the Janta Darbar convened by the police station on every Saturday
to settle such a type of dispute. ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए फ्रॉम लिखे हुए काट दीजिए फ्रॉम रीडिंग ऑफ द एफआईआर काउंटर एफिडेविट ऑफ द एसएचओ इट सीम्स दैट all the officials are hand in gloves with some land mafia and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. The क्या लेटर सब लगा दिए हैं मैडम? भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। ये कौन है? मधुरेंद्र कुमार कौन है? 8 These are land mafia worship. Huh? They're land mafia worship. Respondent number 11 has sold property to this 8, 9, 12 worship. 8 to 12 इनका पार्टनर कोई पुलिस वाला भी है क्या? वर्षिप पुलिस वाले को मैनेज करके इन्होंने हमारे ऊपर ये कर दिया, पोजीशन हटाने के लिए वर्षिप। Issue notice to respondents number 8 to 12 through the officer in charge Agamkuwa police station. The officer in charge Agamkuwa police station will serve notices upon the respondents number 8 to 12 and will inform them about the next date fixed in this case. List this case. आज कौन सा दिन है? थर्सडे। अगला थर्सडे क्या है? List this case on 8th of December. On that date, पटना सिटी का सर्किल ऑफिसर या पटना सदर का कौन आएगा? अगमकुआं में मैडम? पटना सिटी का वर्षिप। पटना सिटी। तो आप सदर भी लिखते हैं, सिटी भी लिखते हैं। On that date, the superintendent of police East Patna East, the circle officer Patna City and the officer in charge Agamkuwa police station will appear. It is in the court. It is made clear that if on that date the respondents number 8 to 12 do not appear in through their counsels, then appropriate order shall be passed against them. The SHO of Agamkuwa police station will file a supplementary affidavit bringing on record the criminal antecedents of respondents number 8 to 12. किस पर कितना केस है? ठीक है, कौन है इसमें? क्रिमिनल कौन है? 8, 9, 10, 12 वर्षिप। इन लोगों पर क्रिमिनल केस भी है।
एक बार हम पता कर लेते हैं, लेकिन यही सब लॉर्डशिप एंटी सोशल कितना कितना कट्ठा जमीन है आपका जिस पर कब्जा किया है? 5 डेसिमल कितना स्क्वायर फीट हुआ? एक कट्ठा में कितना डेसिमल हुआ? 3 हुआ। 1.5 कट्ठा के आसपास है। कहाँ पर है ये जमीन के अगम कुआं में? अरे आप वकील साहब पटना के रहने वाले नहीं हैं क्या? वो उनसे पूछ रहे हैं। अगम कुआं में लॉर्डशिप। अगम कुआं में कहाँ? कभी गए हैं अगम कुआं? आपके बगल में कौन इसी केस में है? कहाँ पर है? कांटी फैक्ट्री के आसपास है लॉर्डशिप। वो इस केस में है? लॉर्डशिप साथ में। कहाँ पर है ये जमीन वकील साहब? एग्जैक्टली सर नहीं पता है, अगम कुआं में ही है। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, लॉर्डशिप। अगम कुआं का बाउंड्री जानते हैं ना? बाईपास तक है जी। Lordship, in the meantime, Lordship, I may be permitted to repair my house, Lordship. घर तोड़ दिया है? Lordship, part of the घर का कब्जा अभी भी आपके पास है? मेरे ही पास है, Lordship. और इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दी। बहुत अच्छे। एफआईआर नंबर दीजिए, नंबर बताइए। आपको जेल में बंद नहीं किया कम है क्या? एफआईआर नंबर बताइए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। क्या मिस्टर खान आप ही का आदमी है ना अगम कुआं अफसर इंचार्ज आजकल? सरकार के वकील हैं। लॉर्डशिप 801 ऑफ 2022। किसको किसको एक्यूज बनाया? आपको पिटिशनर के अलावा? लॉर्डशिप मेरे फैमिली में 5-6 आदमी को। The further proceedings of Agam Kuan police station, it has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agam Kuan police station PS case number 801 of 2022 shall remain stayed and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. और कुछ? आइए उस दिन इसको रखिए 10:30 बजे। उस दिन 8 तारीख को 10:30 बजे आप लोग सब कोई आएंगे। आप अपने क्लाइंट को भी बुला लेंगे क्योंकि वही बताएगा। अब आपको अगम कुआं में कहाँ है यही नहीं मालूम है तो आप क्या बताएंगे फिर?